Thank you, Ramjas. Thank you, Professor Ashok, Professor Jagjeevan. Also, my thanks to Professor Hardeep, who I was fortunate to meet her just before coming here. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस शानदार कॉलेज में फिर से आने का अवसर दिया। फिर से इसलिए कि बार बार न जाने क्या हो रहा था कि मेरे पास बहुत सारी स्मृतियां इस सभागार की हैं। हालांकि जो मेरी स्मृति में सभागार है उसमें ये ग्रेनाइट का फ्लोर नहीं था, उसमें कुर्सियां भी भिन्न तरीके की थी, लकड़ी के बेंचेस वाला पुराना ऑडिटोरियम। जब हम लोग डिबेट कॉम्पिटिशंस के लिए इन कॉलेजेस के ऑडिटोरियम्स में आया करते थे, मैं और डॉक्टर विकास, हम लोगों की टीम हुआ करती थी। जाकिर हुसैन ऑफ कैंपस बेचारा सा कॉलेज उसकी, और हम लोगों के मन में एक तरह की बदले की भावना कैंपस के कॉलेजेस के खिलाफ हुआ करती थी। शायद ये रहा होगा कि हमें एडमिशन नहीं दिया, आओ हम इन्हें बताते हैं कि क्या बस किया। तो कैंपस कॉलेजेस के ऑडिटोरियम्स में हम लोग लगभग तहस नहस किया करते थे, अलग अलग डिबेट, डेक्लेमेशंस, पोएट्रीज, उन कॉम्पिटिशन्स में। और उसके बाद एक लंबा अरसा रहा जब मुझे इस कैंपस में, रामजस के कैंपस आने का अवसर नहीं मिला। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार ये हो रहा था कि मेरे पास कॉलेज से इनवाइट आता था, और मैं स्वाभाविक तौर पर, मेरा एक, जैसे सबने बताया कि मेरे लिए एक्टिविज्म का हिस्सा है, जिसका अर्थ ये है कि जब भी कोई पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन, बेसिक क्वालिफिकेशन है पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन, जब मुझे इनवाइट करता है विद्यार्थियों से बात करने के लिए, तो जहां तक संभव हो मैं उसे स्वीकार करता हूं। वो इसलिए कि मुझे लगता है कि वो एक अवसर है जब मैं अपनी उस पब्लिक फंडेड एजुकेशन को रीपे कर सकता हूं, जिसकी वजह से मैं इस लायक बना कि आप मुझे बुला सकें। मैं दिल्ली के भजनपुरा नाम के बस्ती में पैदा हुआ, जो उस समय अनऑथराइज कॉलोनी कहलाती थी। मैं स्कूल में पढ़ सका क्योंकि स्कूल की फीस उस समय कुछ 50-60 पैसे हुआ करती थी। प्राइमरी स्कूल की 2 रुपए 10 पैसे होती थी, सरकारी सेकेंडरी स्कूल की, और 10-12 रुपए हुआ करती थी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। So since I was a student of a public funded education, therefore it was possible that I had that small window of social mobility, that I'll be able to rise and be something someday, and thankfully because of that public education I am here and I can address you. So the only way I can pay it forward or pay it back is to consider कि मुझे जो शिक्षा मिली वो मुझ पर कर्जा है, वो मुझ पर कर्जा है कि मुझे अगली पीढ़ी को उसे वापस करना है। इसलिए जब भी किसी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन से मेरे पास इनवाइट आता है, मैं कोशिश करता हूं कि उसे स्वीकार करूं। रामजस से पिछले साल भी मेरे पास एक इनवाइट आया, मैंने उसे स्वीकार किया, लेकिन फिर मेरे पास सूचना है कि सर ऑडिटोरियम जल गया है, इसलिए हम आपका कार्यक्रम नहीं कर पा पाए। उसके बाद एक और इनविटेशन आया जो कि शायद साहित्य सभा या किसी हिंदी विभाग से था, जो मेरा अपना विभाग भी है, तो मैंने उसे भी स्वीकार किया। पर उसके बाद पता लगा सर ऑडिटोरियम मिल नहीं पा रहा है। अब तक विद्यार्थी संपर्क कर रहे थे, इसलिए जब प्रोफेसर अशोक ने संपर्क किया, मुझे लगा इस बार तो सर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। So finally I'm here and I'm really glad. I'm glad that I'm getting this wonderful opportunity to interact with the wonderful college with huge history. In the same manner, in the absolutely same manner as I said that a student from off-campus college, Delhi College is the same college as Zakir Hussain College. Its original name was Delhi College. And we used to have that kind of a revenge to get into the campus and tell them that we are also worthy of it. I don't know whether you realize or not, but for many years, Ramjas was doing the same within campus.
There were classes within campus also. There was a Stephens and Hindu, and then there was a Ramjas. And Ramjas used to represent us, the downtrodden, in the academic world, in the campus. But you need to understand why I'm so happy that the public funded education still, with whatever drawbacks, with whatever quality issues, with whatever problems coming from the funding front, it's still a hope, a ray of dream for many, many people in this country. And that brings me to the topic of today's keynote, that is challenges of dreaming big. In next course of a few minutes, maybe 25-30 minutes, if you'll allow, तो मैं इस विषय पर आपसे बात करना चाहूँगा. I'll be mixing the languages. I know हमारे कैंपस में खासतौर से आप बेचारे साइंस वाले लोग, कितने लोग साइंस वाले हैं? Raise your hand. Right. बुरा मत मानिएगा, साइंस वाले लोगों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता, शायद इंट्रोडक्शन में बता दिया कि ओरिजिनली मैं साइंसेस से हूँ. I did that electrical engineering. I know you must have watched me asking that question. The carburetor engine and the MPFI engine. So that question is not coming from vacuum. It is coming from my studies. I had been a quality control engineer in a small scale industry also. So sciences is not that इतना पराया नहीं है कि इस पर बात न कर सके. लेकिन साइंसेस वाले लोगों में भाषा को लेकर ये अजीब गड़बड़ होती है. सारे टीचर्स बताएंगे, हालांकि कभी-कभी टीचर्स में भी होती है. वो ये है कि उनको लगता है कि उनको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, और यूजुअली उनको अंग्रेजी अच्छी नहीं है. उनकी अकेली क्वालिफिकेशन होती है कि उनको हिंदी बुरी आती है. इसलिए वो ये कहकर काम चलाते हैं कि आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई हैव स्टडीड ओनली थ्रू इंग्लिश मीडियम, सो आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इट. ये अलग बात है कि अंग्रेजी भी बस जैसे तैसे, पर थैंकफुली साइंसेस में आपको भाषा नहीं सिखानी है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, और वो हम सब लोगों को अच्छे से आते हैं और वो अच्छे से काम भी करते हैं. सो रियलाइजिंग दैट लिमिटेशन, आई विल बी काइंड ऑफ मिक्सिंग द बोथ लैंग्वेजेस. ऐसे हिंदी नहीं बोलूंगा कि आप ये कह सके कि समझ नहीं आई, उतनी अंग्रेजी भी नहीं बोलूंगा कि आप ये कह ना पाए कि समझ नहीं. So what I to begin with, this idea कि बड़े सपने लेने की चुनौतियां क्या, इसे जरा हम समझने की कोशिश करते हैं. मैं पहले तो ये बताऊंगा कि बड़े सपने लेने की चुनौतियां क्या हैं, और फिर अगर कुछ समय रहेगा तो ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि उन सपनों को पूरा करने की चुनौतियां. जब मैं सपने कह रहा हूं तो आई एम टेकिंग इट बोथ इन द लिटरल सेंस as well as obviously the metaphoric sense. प्रतीक के तौर पर सपने भी और रियल सेंस में सपने भी, इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे. लेकिन बड़े सपने लेने की जो पहली चुनौती है, उस चुनौती के प्रमाण स्वरूप मैं आपके सामने खड़ा हूं. नहीं, मैं अभी अपनी कहानी नहीं बता रहा हूं कि मेरी कहानी से कोई सपना सिद्ध होता है, नहीं. अभी मैं आप पर सवाल उठा रहा हूं. मैं रामजस आना चाहता था, मेरा नॉस्टैल्जिया था, मुझे रामजस जाकर अच्छा लगता है, मेरे एक्टिविज्म की डिमांड है. लेकिन फिजिकल साइंसेस की वह सोसाइटी जिसने विजेंद्र सिंह चौहान से ये कहा कि सर आप रामजस आइए, या उनसे जिन स्टूडेंट्स ने कहा कि विजेंद्र चौहान को बुला लीजिए, उनसे चलिए सवाल से शुरू करते हैं कि आपने अपने ही कैंपस, अपने ही विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में हिंदी पढ़ाने वाले एक मास्टर को एक फिजिकल साइंसेस के इनॉग्रल लेक्चर के लिए क्यों बुलाया? लेट अस आस्क द बेसिक क्वेश्चन. ऑब्वियसली फिजिकल साइंसेस हिंदी साहित्य पे कोई चर्चा नहीं करने वाला था, और हिंदी साहित्य पे भी चर्चा करनी होती तो खुद रामजस कॉलेज और कैंपस के दूसरे कॉलेजेस में
साहित्य में मुझसे विद्वान लोग मौजूद हैं, ऐसा कोई गलतफहमी मुझे नहीं है कि मैं कोई साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान हूं. I have my own area of specialization. I understand that. But why? Why students of Ramjas College, including a lot of science students, consider that Vijender Chauhan will be apt choice for an inaugural lecture for Physical Sciences Society? Why I am asking this question and giving so much emphasis on it? Because it has a lot to do with your ability or restrictions on dreaming big. I tell you honestly, I am under no illusion. You invited me because day after day, Vijender Chauhan's face is thrown on your mobile screens. Casual. You end up looking at one reel, and if you spend maybe just 4 seconds extra, then the algorithms of that AI are able to guess that you can be hooked on Vijender Chauhan. And if that happens to be 10 seconds, 15 seconds, then you are doomed. Because now the next reel of Vijender Chauhan will be thrown at your face. Again, and again. And after a while, you'll start thinking what algorithms want you to think about. And that is, the dream merchant Vijender Chauhan is selling the dream, and you're buying the dream, and you're made to believe that it is your dream. Please understand what has happened. Those algorithms, that silly codes, decided what should be the dream for you. आपसे आपके सपने लेने की सत्ता छीन ली गई. आपसे आपके अपने सपने क्या होने चाहिए, ये फैसला लेने की सत्ता, चॉइस छीन ली गई. और केवल छीन नहीं ली गई, आपको उल्टा ये एहसास करा दिया गया कि ये जो आप कुछ कर नहीं रहे हो, पेट पर सजाकर आपको सपना दिया गया, वो आपका अपना फ्री चॉइस का सपना था. So much so that you kept telling everybody. You in fact start pushing Professor Ashok Kumar कि सर हमें तो विजेंद्र चौहान ही चाहिए. क्यों? क्योंकि वो सपना पूरा कराएंगे जो हमारा सपना है, विदाउट रियलाइजिंग कि वो आपका सपना नहीं. These silly codes, these algorithms, this AI decided dreams for you. You're robbed of your ability to dream freely. I'm sorry for dropping this bomb in the beginning. आपने उम्मीद की थी विजेंद्र चौहान आएंगे, 1, 2, 3, 4 तरीके बताएंगे, उसके बाद इस हॉल में बैठे हुए अधिकतर बच्चे 3 साल के अंदर आईएएस बन जाएंगे. नहीं बनते. No, Vijender Chauhan can do it. Not because I'm saying that वहां पे कोई गड़बड़ी होती है, नहीं. बट आप लोग तो फिजिकल साइंसेस के हैं, सब लोगों ने मैथ्स पढ़ाई है. कैन यू चेंज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज स्ट्रेट. 8 lakhs gonna apply, 800 will be selected. Out of those 800, there'll be only 150 IAs. Maximum, usually less than that. Out of those 150, 75 are the ones who are already selected in some service, working for improvement of the service. Only around 75 will be IAs. 80 मान लीजिए. 8 lakh, 80. And this mathematics is strict, it cannot be changed. So, by sheer mathematics, it is clear that you are trying for this dream which Vijender Chauhan's face, because thanks to Vijender Chauhan. See, I am using Vijender Chauhan because it is easy to use my name.
मैं किसी और का सच में नाम ले दूंगा तो उन लोगों को नाराजगी हो, ठीक है ना? सो आई एम यूजिंग माई नेम, बट यू प्लीज रिप्लेस दिस विद, कंसिडर इट एज एक्स, ठीक है? और एक्स में वैल्यू वो डाल लीजिएगा जो आपके दिमाग में आ रही है, जिसकी वजह से आपको ये महसूस हुआ कि आपको आईएएस के किसी मोटिवेटर का लेक्चर सुनने के लिए इतनी मशक्कत करनी चाहिए, ठीक है ना? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. Algorithms made you believe that you can become IAS officer despite mathematically you knowing well the chances of your becoming IAS officer is almost zero. I mean tends to zero होता है ना आपके, tends to zero because it's a sheer mathematics. Out of 80 lakhs 80 will be selected. आप ये कहते हैं नहीं उन 80 में एक मैं हूं, बाकी मुझे नहीं पता. ऐसा सोचने वाले 8 लाख हैं. I'm sorry, my idea is very simple. मैं ये नहीं कह रहा कि आप आईएएस मत बनिए, कोशिश मत कीजिए. मैं आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो भी बनिए, जो बनना चाहते हैं, आपका बिल्कुल हक है वो बनने की कोशिश करने का. लेकिन इस गलतफहमी में प्लीज मत रहिए कि जो आपके मन में आ रहा है कि आपके सपने हैं, वो दरअसल आपके सपने हैं. इस गलतफहमी में मत रहिए. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि द फर्स्ट चैलेंज ऑफ ड्रीमिंग बिग इज यू आर नॉट अलाउड टू ड्रीम बिग. दैट इज द फर्स्ट चैलेंज. योर एबिलिटी टू ड्रीम freely is hugely restricted by many things. Hugely restricted. बिकॉज अगर आपको लगता है कि सपने आजाद होते हैं, हर किसी की जिंदगी में आ जा सकते हैं, तो सोच के बताइए कि जब आपकी उम्र परियों के सपने लेने की थी, जब आपकी उम्र पहाड़ों के, फूलों के और तमाम तरीके के आजाद सपने लेने की थी, उस समय क्यों ये सोसाइटी पिली पड़ी थी कि आपके मन में जेईई क्लियर करने का सपना बैठाया जाए. यशपाल कमिटी, which was constituted in 1991 to look into primary education, gave its report in 1991 called Learning Without Burden. It was for primary education. Professor Yashpal, all of you know, was a wonderful scientist, the ISRO person. Also, Professor Krishna Kumar, who was professor in Central Institute of Education, later became director NCRT, Padma Shri, was member of this committee. And this committee gave report in 1991-92 saying कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर, प्राइमरी स्कूल के बच्चों बस्ते का बोझ है, लर्निंग का बोझ है. क्योंकि प्राइमरी स्कूल, क्योंकि उन्हें 12th में प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल देना होता है. 12th, ये बच्चे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनको ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है. मोर देन प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट ऑफ जापान, मोर देन प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ यूरोप. जापान में 20 तक की गिनती सिखाई जाती थी पहले क्लास के बच्चे को, और भारत में 100 तक की गिनती सिखाई जाती है, 5 गुना. क्यों? क्योंकि उनको 12वीं क्लास में प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल देना था. सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर रॉबिंग आवर यंग वंस. हम अपने बच्चों के सपने उनके बचपन से ही छीन ले रहे हैं, क्योंकि उनको कोटा जेईई करना है, कोटा नीट करना है, उनको करोलबाग आईएएस करना है, मुखर्जी नगर आईएएस करना है. So your dream, your problem, your restrictions, आपके सपनों की बाधा ये नहीं है कि सपने पूरे कैसे होंगे. सपनों की बाधा तो पहले ये है कि आप सपने लेंगे कैसे. आपको सपने नहीं लेने दिए जा रहे. पूरे देश के पास 3-4 तो सपने बचे थे. फिजिकल साइंसेस ग्रुप ए ले रहे हो, जेईई क्लियर कर लो, आईआईटी चले जाओ. ग्रुप बी ले रहे हो, नीट क्लियर कर लो, डॉक्टर बन जाओ. और इन सबको करने के बाद या ना कर पाओ, दोनों ही स्थिति में यूपीएससी कर लो, आईएएस कर लो.
का देश, 50 करोड़ की युवा आबादी और सपने 3। You need to understand that we are deprived of our diversity of dreams, and that is the biggest challenge. But the dream you are making, the way you are dreaming, जो आपका सपना है वो छोटा सपना है। बड़ा सपना क्या है? IAS तक। ये जो सपनों के बीच हेजेमनी खड़ी हो रही है कि आपका आर्टिस्ट बनने का सपना, आपका साइंटिस्ट बनने का सपना, आपका टीचर बनने का सपना छोटा सपना है और आपका IAS बनने का सपना बड़ा सपना है। ये जो हेजेमनी है वो आपको अपने सपनों को से नफरत करना सिखाती है, आपके अपने सपनों से। जब आपको अपने सपनों से नफरत शुरू होती है तो आप क्या करते हैं? आप दूसरों के सपने उधार ले लेते। पिताजी का सपना, पड़ोसी का सपना, चाचा का सपना, गांव का सपना, कस्बे का सपना। गांव में पिताजी की या चाचा जी की पड़ोसी से लड़ाई हो गई, उसने उसकी आपकी मेड़ काट कर थोड़ी सी जमीन दबा ली। अब उनके मन में है कि उनका भतीजा IPS हो जाए एक बार, उसके बाद दिखा दूंगा। And not just that, and please trust me, I'm not at all even talking about कि ये बहुत करप्ट सर्विस है, इससे बहुत पैसा आता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। Only yesterday I was having this long conversation with a corporate. They want me to invite me over for the social mobility, and we were having a detailed discussion that how in our society the social mobility is different from the European societies. Because in European society, essentially it means that once you move economically, your social mobility is ensured. अगर आपकी आमदनी बढ़ जाए तो पश्चिम में तय हो जाता है कि आपका सामाजिक रुतबा बढ़ जाता है। हमारे देश में नहीं होता। इसलिए only last week I was interviewing a candidate who was IIT Mumbai CSE, followed by IIM Ahmedabad. Worked for 3 years in consulting firm, drawing a salary more than 2 lakh rupees per month in India, or more than 10 lakh rupees when he was posted abroad. And he came back to become a babu. The poor guy was from Bihar, but that doesn't matter. What is important over here is that if money is bringing that social mobility, then this person should be on the top of the ladder. But he realized that in our country, the economic mobility will not essentially bring social mobility. इसका मतलब हमारे सपनों पे जो बाधा है वो भी इसी सोशल सेक्टर से आ रही होगी। You need to look and find out what is stopping your dreams. आपके सपनों के रास्ते में बाधा कौन है? व्यक्ति के तौर पे वो आपको पिताजी दिखेंगे, मम्मी दिखेंगे, लेकिन व्यक्ति के तौर पे मत देखिए। स्ट्रक्चर के तौर पे देख के समझने की कोशिश कीजिए कि पीछे क्या है। एंड देन यू विल रियलाइज कि आपके सपनों पर आपके डेप्रिवेशंस की जंजीरें पड़ी हुई। अदर डे आई सॉ समबॉडी इन पटना, a teacher was talking about her कि उस बच्ची ने, वो कोई PCS की तैयारी कर रही बच्ची थी, उस बच्ची ने आकर कहा कि सर देखिए मैंने अपने सर को मूंड लिया है। लड़की ने अपने सर को शेव कर लिया। मैंने कहा क्यों कर दिया? कि पिताजी, घर में माताजी पिताजी शादी करने वाले थे, तैयारी करना चाह रही थी और माता पिता नहीं चाहते कि तैयारी करे, वो चाहते हैं कि शादी कर ले, तो उसे बचने के लिए उसने अपने सर को शेव कर लिया, ताकि कम से कम इस देश में अभी थैंकफुली या अनफॉर्चुनेटली, दोनों आप देखिए, दुर्भाग्य है कि भाग्य है कि हमारे यहाँ गंजी लड़की की शादी नहीं हो पाएगी, लड़का ही नहीं करेगा। एंड दैट्स नॉट ओनली रीजन। आप जाइए करोल बाग में, आपको पता लगेगा कि मुखर्जी नगर में आपको पता लगेगा कि लड़कियां जब घर से भेजी जाती हैं और लड़के भेजे जाते हैं, उन दोनों को दिए गए संदेशों में अंतर होता है। लड़के को संदेश दिया जाता है जाओ बेटा कोशिश करो, क्लियर कर लो एग्जामिनेशन, घर की जिंदगी बदल जाएगी। लड़की को संदेश दिया जाता है जाओ कोशिश कर लो, 2 साल दे रहे उसके बाद नहीं तो शादी कर देंगे।
And this additional load, that if you are unsuccessful in 2 years, probability I just told you almost 0%. If you are unsuccessful in 2 years, you will be married off. Married off. हमारे यहाँ लड़कियों की शादी करके भगाया जाता है. Married off होती है. Married in नहीं होती. ठीक है? So this social category of gender is hugely obstructing your dreams. You're not able to even dream well. मतलब भूल जाइए आप शाहरुख खान की तो खैर क्या आप सपने लेंगे. आपको सपने शादी से आगे जाने नहीं दे रहे हैं. आपको गलत सपने लेने, बुरे सपने लेने, सपनों में गलती करने की तो आजादी ही नहीं. मल्टीप्लिसिटी ऑफ ड्रीम्स की गुंजाइश नहीं. डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम गया तेल लेने. Effectively, your dreams are curtailed because of your social categories like gender, like caste, like community, and other social categories. I came across a wonderful case in which a friend, I'm changing name here, a friend whose name was Ajay Mehta was a student of Satyavati College in 1993-94 when we used to debate. He was a good debater, reasonably good debater, not as good as we were. तो उस बच्चे ने उसको एडमिशन मिला, डी स्कूल में आ गया बाद में, क्योंकि उसके पास रिजर्वेशन था. अदरवाइज उसको बाहर कर दिया जाता. सो वी हैव सम एटलीस्ट सम गुड पॉसिबिलिटीज हियर. फाइनली उसको सीआईआई में जॉब मिली. एंड आफ्टर 15 years or so, when we met, incident him and we said, "Hi Ajay, how are you?" Somebody who was with him told him, "Okay, आइए मिलिए. This is Ajay Aryan." How this Ajay Mehta suddenly became Ajay Aryan? Nothing wrong with Ajay Aryan. Absolutely nothing wrong with Ajay Mehta. But I hope you understand what I'm saying. Your caste, your community, your social identity in this society is one that restricts all your flights. So how do we ensure that we are able to dream well? Please understand, AI आपके खिलाफ है, social categories आपके खिलाफ है, algorithms आपके खिलाफ है, आपकी economic conditions आपके खिलाफ है. ऐसे में जो पहली चीज आप कर सकते हैं, और मैं आपसे उसकी गुजारिश कर रही हूं, इसे मैं अपना एक्टिविज्म कह रहा हूं, कैंपस दर कैंपस जाके जो मैं गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज ओन योर ड्रीम्स. आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न कि आप में से कितने लोग आईएएस बनते, क्योंकि अगर मेरे जानने वालों के आईएएस बनने से मेरी जिंदगी बदलती होती तो आप सोचते थे मेरे जानने वाले कितने आईएएस बन चुके. इट डजंट चेंज आई टफ. आई एम व्हाट आई एम. आई एम अ टीचर. I love the way I am. I want to die as a teacher. लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि प्लीज अपने सपनों को हासिल कीजिए, उन्हें ओन कीजिए. किसी दूसरे के दिए सपने, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो किसी और तरीके की एल्गोरिथम. Because there is a huge danger when you let AI decide your dreams. आपको लग रहा है पिताजी कर रहे हैं, पिताजी नहीं कर रहे हैं. पिताजी के मोबाइल पर भी वही विजेंद्र चौहान दिखाई जा रहे हैं जिनसे उन्हें लगा अरे हमारा बउआ भी कर लेगा. और वो आपको रोज फोन करके कह रहे हैं मैंने बेटा फोन वो देखा था. यू नो व्हेन आई मीट पीपल एट द एयरपोर्ट, स्टूडेंट लाइक यू, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका क्या वो होता है कि सर आपके साथ सेल्फी लेनी है, क्योंकि उसके बाद उनका आंसर होता है कि मेरी मम्मी या मेरे पापा आपके बहुत बड़े हैं. And that is a dangerous thing. अगर मैं आपके मम्मी पापा के फोन पे जा रहा हूँ, मैं मतलब विजेंद्र चौहान ही नहीं, I said X, तो समझ जाइए कि एल्गोरिथम का शिकंजा आप पर बहुत गहरा कसा हुआ है. Am I really worried only about the fact the career choices? No, please understand, this AI is not deciding only the career choices. This AI is deciding what you will wear. आपके सपने केवल नौकरी के मामले में नहीं, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, आपकी रिलेशनशिप्स किसके साथ होंगी, आप किसे पार्टनर बनाएंगे, आप किसे चुनाव में जिताएंगे. Everything is being decided mostly by the algorithms and AI.
So if you are able to claim your dreams, you will be able to claim your nation. That is why I am here. So if you want to dream big, it is not about a chair, सफेद बड़ी एक बड़ी कुर्सी जिसमें एक गंदा सा सफेद तौलिया पड़ा होता है. SDM, DM, SP. That's not the biggest dream. The biggest dream is that whether you'll let your next generation to dream freely. That is important. Realize that you had that privilege of going to the public funded education, and so that you can repay, you can pay back those privileges, for those privileges. Because society paid for my education. So whatever privileges you have, privileges of gender, privileges of caste, privileges of community, privileges of any other thing, then you need to understand it, you need to take into account that, you need to be thankful for those privileges and pay back for these if time comes. That's P. The other thing is, as I said, D, that is opposite to P, it's deprivations. In the same way as you count your privileges, please look for your deprivations. If rather than being a boy in this auditorium, you are a girl in this auditorium, you need to know what kind of restrictions your gender has imposed on you. So you need to know your deprivations there. Because you will need to have strategy to overcome those deprivations. Only then you will be able to fulfill your dreams. Whatever these dreams are, I am not talking about UPSC only, please. So you need to count your privileges, you need to look for your deprivations. It doesn't mean that you cannot have both. Even the girls in this auditorium have their privileges. They are sitting in the auditorium of Ramjas College, University of Delhi. That's a huge privilege. All of you know. याद कीजिए अपनी प्राइमरी क्लास के बच्चों को, जब आप प्राइमरी क्लास में थे किसी गांव में. आप में से कुछ लोग तो जरूर ऐसे होंगे जो किसी कस्बे और गांव से आए होंगे. याद कीजिए अपनी क्लास के उन बच्चों को जो आपके साथ आप ही के क्लास में पढ़ते थे. उनमें से कई आपके ही जितने शायद आपसे कुछ ज्यादा कैपेबल थे. आई एम श्योर मेरे साथ देवेंद्र पढ़ता था. मैंने उसके बारे में अक्सर बात की. He was a wonderful signboard artist. He ended up becoming signboard artist. I am here discussing all this with wonderful students of Ramjas. So you, despite it having certain deprivation, will also have certain privileges. But let's talk about deprivations. Your deprivation of your caste, your gender, your community, your class, everything. You need to understand it, and then you need to devise ways to overcome these deprivations. You cannot start competing with Akshat Jain from day one. You need to forego, you need to find out strategies to elevate yourself to a certain level so that you'll be able to later compete with others. Because saying that competition means equal is the biggest fallacy. It is never. Then we come to the A part. A is achievement. When I say achievement, it doesn't necessarily mean that you have to become IAS topper. No. Whenever you go beyond your comfort zone, that is called achievement. आप किसी कस्बे में थे, पिताजी से लड़कर, किसी का सहारा लेकर, वहां से निकलकर दिल्ली पहुंचे. अचीवमेंट है. If you want to fulfill your dreams, इन छोटी-छोटी या बड़ी-बड़ी जैसी आप माने, इन अचीवमेंट्स पर नजर रखिए, इन्हें सेलिब्रेट कीजिए एट डेली बेसिस. छोटी-छोटी अचीवमेंट. आपने सिर्फ ये सोचा था कि आज एक पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, शाम तक वो चैप्टर आप पढ़ गए, आपने एक अचीवमेंट हासिल की. सेलिब्रेट इट. Maybe give yourself a small chocolate, maybe give yourself a cup of tea, whatever. Achievement is important, but achievement means coming out of your comfort zone. Only then you realize that for Akshat Jain to become IAS officer was not coming out of comfort zone. It was like being obvious. You becoming even a Group B service officer
maybe a coming out of comfort zone. But that's not the only thing. This comfort zone comes when you ensure that your process of fulfilling the dream itself is inclusive and diverse. अगर आपके सपनों को पूरा करने की आपकी यात्रा में आपने सिर्फ अपने जैसे लोग ही अपने आसपास इकट्ठे कर रखे हैं, मैं बार बार प्रतापगढ़ कहता हूं, आज रायबरेली कह लेता हूं, कि अगर आप रायबरेली से आए हैं और आपके आसपास सारे लोग आपने दिल्ली पहुंच के भी ढूंढे कि रायबरेली वाले मिल जाओ, चलो एक ग्रुप बना के पढ़ते हैं, फिर आपका कुछ नहीं होने वाला. You need to have diversity within your group, diversity within your preparation. You need to have people from Northeast. If there are students from Northeast in your class and you're not befriending them, you're doing a great disfavor to yourself. You had this wonderful opportunity to learn. Make sure that in your group there should be people from different cultures, different language, different gender, different caste, different community, if possible different nationalities. It will make your process of preparing for anything, for fulfilling your dream, are diverse and hence full of achievements. If you are able to follow this speed, मुझे किसी कोचिंग सेंटर के कोर्स थोड़ा ना बेचने हैं कि मैं यहाँ के कहूँ कि सारे के सारे बनो, मत बनो यार, क्यों बनना है, ठीक है? But whatever you want to do, including becoming civil servant, make sure that you own your dream and you have your PDA intact. You know your privileges, you know your deprivations, you celebrate your achievements. If you are able to do this, trust me, I don't know where you will reach. I don't even care. 140 करोड़ है, 40-50 करोड़ आप जैसे लोग हैं, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप माने कि विजेंद्र चौहान आप ही के बारे में सोचेंगे. क्यों सोचेंगे? कोई भी बनेगा, ए नहीं बनेगा, बी बन जाए. मेरे पास तो हर साल वही 500 लोग आने वाले इंटरव्यू के लिए, क्या फर्क पड़ेगा? But what matters is that you, if you follow your PDA, if you follow your own dreams, whatever these dreams are, you will have a fulfilling life. Why it is important? It is important because today we are the biggest nation with a democratic dividend. 50 करोड़ से ज्यादा युवा लोग हमारे पास हैं. ये सारे के सारे युवा लोग अगले 25 साल में बुजुर्ग होने वाले हैं और अगले 25-50 करोड़ हमारे पास नहीं होंगे उनकी देखभाल करने के लिए. Because obviously our population is declining. Our TFR is less than 2 now. So effectively, the demographic dividend today will be a demographic liability tomorrow. So if you don't make good of your life, we'll be a doomed nation. Therefore, I request you, please own your dream, please find your dream, please follow your PDA and make this nation proud. Thank you. फिर क्या मैं आपका आशीर्वाद देता हूँ सर. प्लीज माफ करिए सर, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ सर. मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या करूँ बहुत. Okay, you want me to answer this? Yes, sir. The paper I teach at my college is called Identity. मैं अपने कॉलेज में जो हिंदी का बच्चा, जो हिंदी के विद्यार्थी कुछ होंगे तो जानते होंगे, अस्मिता मूलक विमर्श पढ़ाता हूँ, जिसमें हमें क्लास में जेंडर पढ़ाना होता है, कास्ट पढ़ानी होती है और दूसरी आइडेंटिटीज पढ़ानी होती है. लास्ट ईयर का पेपर है, फाइनल ईयर का 5th सेमेस्टर, और उसका जब फेयरवेल होता है हमारा डिपार्टमेंट का, तो उसमें हमेशा 3 या 4 लड़कियां खड़ी होती हैं, पास आती हैं, खूब प्यार से गले मिलती है. उसके बाद कहती है सर अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, आपने जेंडर पढ़ा दिया, अब हमें सच्चाई पता है, क्या करना है ये नहीं पता. पहले आसान था कि हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लिया है, ग्रेजुएशन खत्म होगी, पिताजी शादी कर देंगे, फर्स्ट क्लास गृहस्थी चलाएंगे. अब आपने पेट्रियार्की पढ़ा दी.
You need to understand what I'm saying. As a teacher, it's my responsibility to share what I honestly believe must be shared. What I honestly believe is truth. And truth is never comforting. It cannot be. आश्वासन तो झूठ ही देता है. मैं यहाँ खड़ा होकर कहता कि फिस्ट पंपिंग होती है ना एकदम, you can do it. Dream big. If you work hard, you will be successful. अब ये स्टेटमेंट में गलत कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ गलत है. Similarly, it was my responsibility to make enlighten a bit whatever was within my capacity. You realize that when you were there for the NEET JEE, you were not living your dream. You also realize that when you are here for UPSC thing, you are not living your dream. Mostly. So either find out what your dreams are. Otherwise, dive deep in your life. How do I evaluate candidates sitting across the table? I look at his or her life and the twists and turns in his or her life and try and read his life like we read a book. If I can do it in 30 minutes, why can't you do it in 3 months? Read your life carefully. If you read your life carefully, you'll realize what exactly your dreams are or can be. And there is absolutely nothing wrong in dreaming which society believes is a small dream. Nothing wrong. Because this idea of some dreams being small, dreams being very big is a social construct. It's not real. Trust me. ऐसा नहीं है कि बाबू बन के जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है. मैं आपको बताऊंगा पिछले ही साल में कम से कम 4 को मैं जानता हूं प्रॉपर IAS ऑफिसर रिजाइंड टू डू समथिंग एल्स. Recently, O.P. Chaudhary from Chhattisgarh cadre, he resigned to become a MLA and he lost the election of MLA. This time again he won finally and is a minister in Chhattisgarh. But in the earlier occasion when he resigned from civil services and contested election, he lost. Doesn't matter. He is living his dream. My request is that before you discover your own dream, पहले इस डिनायल से बाहर आइए कि जिसे आपके पिताजी ने कहा या विजेंद्र चौहान की रील्स में कहा वो आपका सपना है. पहले उससे बाहर आइए. अगर आप उससे बाहर आ जाएंगे तो बात की जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी. और नहीं बाहर आएंगे तो कोई बात नहीं, कोचिंग की 2 लाख रुपए फीस दे देंगे, हम लोग थोड़े से अमीर हो जाएंगे. थैंक यू. I'm sorry, I'll be able to take only one more question. The question is, as you told about dreaming big, sir, the main obstacle in dreaming big is, as you know, that the proportionality of failure in dreaming big is also the same. So when we dream big, a fear of failure is in our mind. So we think, and our parents also say that we should have a plan B, that the failure should not impact our mind. So sir, as I'm a student of physics honors, sir, we are in such a practical course and research work and lot of students with this. Sir, I cannot take my time to do the UPSC or which is my time. So sir, what can I do? Okay, I am not again questioning whether or not it's your dream. That part I have already done for everyone, right? So presuming if it is your dream, that case, उस केस में 2 चीजें केवल बतानी है. पहली तो आपके पेरेंट्स बिल्कुल सही कहते हैं और आपका आकलन एकदम सच है कि possibility of failure is very high, right? But then it also depends कि आप failure कहते किसे. My suggestion always been that your dream should not be a concrete verifiable thing. It should not be a destination. I've delivered a TED talk with this title itself, that you should dream process, you should dream journey rather than destination. Because problem with dreaming destination is it is so verifiable that either you say you're successful, otherwise you're absolute failure. आपका एक PDF में नाम आया तब आप सक्सेसफुल हैं और उस PDF में नाम नहीं आया तो आप एब्सोल्यूट फेलियर हैं.
जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप पूरी जर्नी को अपना सपना बनाते हैं, देन नो मैटर आप किस उस जर्नी में कहां तक पहुंचते हैं, जहां तक भी आप पहुंचेंगे वहां तक की आपकी जो अचीवमेंट्स होंगी वो आपकी सक्सेस हो। अगर आप उसको एक डेस्टिनेशन से बनाएंगे तो ये बताइए कि मान लीजिए आप आईएएस बन ही गए, तो क्या वह सक्सेसफुल है? लास्ट वीक आई इंटरव्यूड 4 candidates in a single day, all of them IPS officers. 4 candidates, one after, शायद एक ही बैच में होंगे तो एक साथ आए। 4 candidates, all IPS officer appearing again. Why? Because they want to become IAS officer. So becoming IPS was failure for them. Deep in their mind, it was failure. In my career, I have interviewed a candidate who was IAS officer, posted, resigned, again appeared to become IAS officer. Why? Because he was given Tripura cadet. He believed that becoming IAS officer with Tripura cadet is a failure. So if your destination is too concrete, then there is a problem. I'll advise you to have a journey as your goal. If it's a journey, then this conflict will also disappear. That you are in your lab, if you are in your library studying your physics or things like that, that's not in contradiction with your preparation for civil service, because both of them are in the same direction. Both of them are part of the journey. If you believe नहीं मुझे तो कमरा बंद करके 8 घंटे 10 घंटे NCERT पढ़ूंगी वही तैयारी है, those times are gone. 90s में होती थी ये वाली तैयारी जिसमें आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं। Now it is an ecosystem that matters rather than your lone wolf तैयारी. So my request to you is, one, please verify whether it's your dream or not. Once it is verified, please have it in terms of journey, that I'll be preparing for civil services. I'll be acquiring skills, I'll be acquiring knowledge for civil services, and in this course, I would like to become a good officer someday. That should be the idea. I won't advise you to not have plan. मैं तो ये कहता रहा हूँ, इस बात पे लोग हंसते रहे हैं कि अगर आप you're getting into relationship, have your breakup plan ready. If you're planning to marry somebody, have your divorce plan ready. Similarly, if you're getting into any preparation, have your plan B ready. Having plan B does not mean that you're not confident. Having plan B does not mean that you're incapable. It is only the arithmetic, the statistics which suggest that you should always have plan B. Thank you. Thank you. Thank you, sir. This has been a wonderful audience. I love it.